Hello everyone. Good afternoon to all of you. I Anupama welcome you all at the Southwark classes. So here we are preparing for the NTA UGC Net English subject with the help of the MCQs. Are you all getting the audio and the video? If somebody can just drop a message. Are you getting the audio, the video? So let's just start, right? It's our session number 5 today, and as I told you yesterday already that we'll be having MCQs from Canterbury Tales. Alright, so all the best to all of you for today's session. And here we start. Before starting, again, what you have to do is like the video, subscribe the channel, and don't forget to share it with as much of your friends as you can who are preparing for NTA UGC Net English so that they can also avail the benefit of these MCQ series. All right. So yes, the question number 1 for today is, good afternoon, Preet. Yes. So the question number 1 for today is, why are the pilgrims going to Canterbury in Chaucer's Canterbury Tales? हाँ जी, जो pilgrims कैंटबरी की तरफ जा रहे होते हैं, किस लिए जा रहे होते हैं? Why they were going to visit Canterbury? To meet King Henry III, to see a medieval mystery play, to worship the relics of Saint Thomas Becket, or because they are tourists or they are just going as tourists? What is the purpose of their pilgrimage? Yes, very right, Nirmal and Harpreet. Absolutely right. Because they are going there to worship the relics of Saint Thomas Becket, जिसके बारे में आप T.S. Eliot के जो है वर्स ड्रामा मर्डर इन द कैथीड्रल में भी पढ़ते हैं, है ना? यू मस्ट हैव रेड मर्डर इन द कैथीड्रल, जो कि पोइटिक ड्रामा है, वर्स ड्रामा है T.S. Eliot का. उसमें थॉमस बेकेट के मार्टरडम की, मर्डर की जो स्टोरी जो है डिपिक्ट करी गई है, ठीक है? तो उन्हीं थॉमस बेकेट के जो है रेलिक्स को वो वर्शिप करने जा रहे होते हैं. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग विच ईयर्स चॉसर रोट कैंटरबरी टेल? किस ईयर से लेके किस ईयर तक जो है कैंटरबरी टेल्स लिखने का टाइम लिया चॉसर ने? 1385 to 1400, 87 to 1400, 87 to 1410, 1385 to 1410. Yes, absolutely right. Harpreet, Nirmal, Raman, very good बच्चे. The answer is 1387 to 1410. Absolutely right. 1387 to 1410. All right. Now we have is question number 3. How many Canterbury Tales are there in total in the epic? 80, 24, 16 और 50. Total tales कितनी हैं Canterbury Tales में? There are total. How many tales are there in total in the Canterbury Tales? Very good, Raman. Yes, absolutely right, बच्चे. There are total 24 tales. Exactly right. There are total 24 tales. अगेन मैंने आपको ये बताया था, ये भी अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है? बहुत सारी प्लान करी थी, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, मैं वहां पे आपको वो चीज क्लियर करूंगी, ठीक है? चौसर ने ज्यादा प्लान करी थी, बट ही कुड कंप्लीट ओनली 24 स्टोरीज. So that is why it is also called an unfinished work of Chaucer. All right? Okay. Question number 4. In his initial plan for the Canterbury Tales, initial plan, like I just said that there will be a question related to that also. How many stories did Chaucer wish to include? एक्चुअल में ओरिजिनली इनिशियल प्लान के मुताबिक
कैंटरबरी टेल्स में जो है कितनी स्टोरीज इंक्लूड करने के बारे में सोचा था चौसर ने? यस, एब्सोल्युटली राइट हरप्रीत, आई मीन नवनीत, हरप्रीत, एब्सोल्युटली राइट बच्चे, 120। हाँ जी निर्मल, कहाँ चले गए आप? 120 स्टोरीज प्लान करी थी उन्होंने। क्या प्लान करा था? दैट ईच पिलग्रिम विल टेल 4 स्टोरीज, राइट? उन्होंने प्लान करा था दैट ईच पिलग्रिम विल टेल 4 स्टोरीज, 2 while going and 2 while coming back, right? So they had planned that, Chaucer had planned that every pilgrim will tell 4 stories in total. So there were 30 pilgrims all in all, और ये उन्होंने प्लान करा था, तो उसके मुताबिक 120 स्टोरीज बन जानी थी, बट ही couldn't make it to his initial plan, right? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, how many lines the prologue of Canterbury Tales has? Canterbury Tales के प्रोलोग की कितनी लाइंस हैं टोटल? 848, 68, 858 और 838? प्रीत, जब वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी वापस से बच्चे, देन वी विल स्टार्ट, राइट? जैसे ही अनाउंस हो जाएंगी तभी के तभी स्टार्ट कर लेंगे ग्रुप। हाँ जी, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल्स? यस राइट हरप्रीत, यस देयर आर टोटल 858 लाइन्स। हरप्रीत, आपको पता था या आपने सिर्फ गेस करा? शहिष्टा, 858 लाइन्स है बच्चे। प्रीत देखो, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ MCQs ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। नो डाउट चौसर वगैरह सिलेबस च नहीं है, बट हौली हौली आप मूव करांगे, है ना? वेरी गुड हरप्रीत, दैट इज सो ब्रिलियंट ऑफ यू बच्चे, वेरी गुड। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, हु क्रिटिसाइजेस कैंटरबरी टेल्स एज अ पोर्ट्रेट गैलरी? की और कुछ नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स ही कैरेक्टर्स क्रिएट करे गए हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है कैंटरबरी टेल्स में। Who said this about? Who criticized Canterbury Tales in this manner? Dryden, T.S. Eliot, I.A. Richards और Matthew Arnold? हाँ जी, किसने क्रिटिसाइज करा कैंटरबरी टेल्स को एज पोर्ट्रेट गैलरी? Okay, so should I ask, are you all sure? Are you all sure? I just want to ask you, are you all sure? Yes, it was Matthew Arnold. Absolutely right. Very right. चलो, वेरी वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल राइट। रमन, प्रीत, शहिष्ठा, निर्मल, वेरी गुड। चरणजीत, आपका भी बिल्कुल जवाब सही है बच्चे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7, विच pilgrim carries a brooch inscribed with Latin words meaning love conquers all? कौन है जो हमेशा ये ब्रूच पहन के रखते हैं, जिस ब्रूच पे लिखा है लव कॉन्कर्स ऑल? द प्रायरेस, द वाइफ ऑफ बाथ, द मंक और द स्क्वायर? वेरी गुड, आई न्यू इट दैट all the right answers will be coming for this question. Very good Harpreet, Shahishta and Raman. Yes, it is the prioress. Yes, absolutely right. प्रायरेस ये बैच पहन के, ये ब्रूच पहन के चलती है जिसपे लिखा हुआ है लव कॉन्कर्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट टाइम ऑफ ईयर डज द पिलग्रिमेज टेक प्लेस? पिलग्रिमेज किस टाइम पे स्टार्ट होता है? इन द डेड ऑफ विंटर, इन द हाइट ऑफ स्प्रिंग, दैट टाइम ऑफ ईयर व्हेन येलो लीव्स हैंग अपॉन दीज बाउल्स, और ऑन अ मिडसमर नाइट? कब स्टार्ट होती है जो पिलग्रिमेज है? निर्मल, सी वाला दोबारा से ध्यान से पढ़ना। व्हेन येलो लीव्स, येलो कब हो जाती हैं लीव्स ट्रीज पे? ऑटम में।
So it is in the height of spring. They begin it in April. Yes. They started in April now. So that is the spring season. Yes, here you are right. But अगर आप ऐसे वाले में confuse हो जाओगे तो see, your marks will get deducted. No problem, Preet. No problem, बच्चे. Okay, question number 9. Which characters are connected to the church in the Canterbury Tales? The prioress, the monk, the friar, the summoner, and the pardoner, the miller, the ploughman, and the reeve, the knight, the municipal, and the host, the canon's yeoman, the physician, the clerk, or the man of law. Yes, absolutely right, Nirmal and Harpreet. Yes, Shahishta, Raman. Yes, it is the prioress, the monk, the friar, the summoner, and the pardoner who are related to, who are connected to the church. Okay. Question number 10. In what season are the pilgrims? It's a sort of repeated one, but in a different manner. What season are the pilgrims traveling to Canterbury? So they are traveling to Canterbury in spring. Yes, we already had that question. We have already discussed it. Okay. Question number 11. Chaucer is not the writer of the Canterbury Tales, an imaginary character in the pilgrimage, a character in the pilgrimage, and the author of the work as a whole, not mentioned within the text of the tales. So, which is the right option? Absolutely right. बिल्कुल सही बच्चे. हाँ जी, he is a character as well. चौसर भी दो स्टोरीज सुनाता है. दो स्टोरीज सुनाता है चौसर भी, है ना? So he is a pilgrim as well and author तो है ही है वो इस पूरे वर्क के. चलिए, क्वेश्चन नंबर 12. Who called Chaucer as the father of English poetry? ड्राइडन, हमने बात करी थी इस बारे में. फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोल दिया जाता है चौसर को. So who called Chaucer the father of English poetry? Dryden, Ben Jonson, Matthew Arnold or Samuel Johnson? हाँ जी. Who called Chaucer the father of English poetry? Very right, Nirmal, Shahishta, Charanjeet. It was said by Dryden only. वेरी गुड हरप्रीत, अब आपने सही कर लिया आंसर. यस, इट वाज ड्राइडन जिन्होंने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला था. एब्सोल्युटली राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी टाइम्स डिड द वाइफ ऑफ बाथ मैरी इन द कैंटरबरी टेल्स? हाउ मेनी हस्बैंड्स she had? We can put it in this way also. 3 times, 4 times, 5 times or 6 times? Again, you are right. Harpreet, Shahishta, very good. No, it was 5 times, bache. She married 5 times. The wife of Bath married 5 times. और ये often repeated question है. Easy है, लेकिन बड़ी बार आया हुआ है ये. जैसे मैंने आपको बोला था कि कैंटरबरी टेल्स में से मेरे टाइम पे 4 क्वेश्चन थे. मेरे टाइम पे जब मैंने क्रैक करा था 2018 में, तब देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स. तो कैंटरबरी टेल्स में से आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, जितने भी आए. ये कुछ वर्क्स ना फिक्स्ड हैं, जैसे कैंटरबरी टेल्स हो गया, पैराडाइज लॉस्ट हो गया, है ना? तो ये कुछ वर्क्स फिक्स्ड हैं. गुड आफ्टरनून रमेश एंड गुरप्रीत. And yes, I forgot. Happy Republic Day to all of you. Can't say anything as yet, Nirmal. We just have to prepare, है ना? We just have to prepare. Let's see what happens in the exam. We just have to keep preparing from anything and everything. This is English literature and we just can't even measure its extent. It's spread worldwide over. People around the world are writing it. So that is why we have to cover up Canadian writers, we have to cover up African, South African, we have to cover up Pakistani English writers, Indian writers writing in English. I mean, there are infinite, I think. They're infinite, है ना? चलिए, question number 14. Who proposed
I think Nirmal, we are having an English class, don't you think? Or you are a Hindi student? Or you are trying to polish your Hindi as well? चलिए. Who proposed that every pilgrim should tell two stories within the journey? किसने ये बात कही कि दो ही स्टोरी सुनाई जाएंगी जर्नी के बीच में? Chaucer, the host, the prioress, or the nun? Very, very right. Absolutely right. It was planned by the host. हाँ जी, absolutely right. होस्ट ने प्लान करा था कि हर जो पिलग्रिम है वो दो स्टोरीज सुनाएगा. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. से पहले तो जल्द से जल्द हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए. अपना नाम, अपना यूजीसी का सब्जेक्ट लिख के फॉरवर्ड कर दीजिए इन दो नंबर्स पे एंड यू विल वेरी सून बी एडेड इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. राइट, ये सारा जो प्रोसेस है बच्चे चल रहा है. लाइक यू ऑल वर आस्किंग अबाउट इट कि हम मैसेज भेज रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एडेड टू द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन. राइट, वी विल डेफिनेटली एड योर नंबर्स. जिन्होंने जिन्होंने भी मैसेज भेजा हुआ है, they will not be ignored. You will be added in the group. Just have patience. Just keep attending the lecture every day. All right. Question number 15. Therefore, he loved gold in special. The word he refers to whom? हाँ जी, कौन गोल्ड पसंद करता था? The friar, the Pardonor, the Squire, the doctor. Who preferred gold? Very, very good. Very good. Yes, it was the doctor जो अपनी मेडिसिन में भी गोल्ड को यूज करता था. थोड़ा मटीरियलिस्टिक भी था तो इसलिए भी पसंद करता था. दोनों चीजें ही थी. ठीक है जी, सिर्फ एक कारण नहीं था. मटीरियलिस्टिक भी था, अपनी मेडिसिन में भी यूज करता था, तो दोनों चीजें थी. ऑल राइट, चलिए. Moving on to question number 16. And question number 16 is, which are the tales in Canterbury Tales that were written in prose? जो प्रोज में लिखी हुई स्टोरीज हैं कैंटरबरी टेल्स में, वो कौन सी हैं? द पार्सन्स टेल्स, द मेलिबू's tale, the nun's priest's tale, both A and B, A and C, or both B and C? हाँ जी. Which are the tales in Canterbury Tales which are written in prose? The tales written in prose. हाँ जी. So yes, the right answer is very good. It's the Parson's Tales and the Malibu's Tale. Very good. हाँ जी. It's both A and B. Both A and B. Okay? हाँ जी, बिल्कुल. It's A and B बच्चे. Parson's Tales and Malibu Tale. Okay. Question number 17. For which social classes did Chaucer write? Chaucer specifically किन classes के लिए लिखा करते थे? All levels of society, poor classes, elite classes और religious classes? हाँ जी, किन classes के लिए specifically लिखा करते थे Chaucer? I think it's an easy question for all of you to attempt. Absolutely. Okay. So yes, it's all levels of society. Very good. Very good. Okay, it's all levels of society. बिल्कुल सही जवाब. चलिए, moving on to question number 18. And the question number 18 is, who says of Chaucer, he will be read far more generally than he is read now? चौसर के बारे में ये किसने बोला? ड्राइडन ने, ऑस्कर वाइल्ड, जोसेफ एडिसन और मैथ्यू आर्नल्ड? Who said this about Chaucer? He will be read far more generally than he is read now.
It was said by, yes, it was said by Matthew Arnold. Again, it was said by Matthew Arnold. Okay, चलिए. Then we move on to next question, question number 19. And the question number 19 is, what is the narrator's name in the Canterbury Tales? Narrator का नाम क्या है Canterbury Tales के? नरेटर का नाम क्या है कैंटरबरी टेल्स के? नरेटर का नाम आपको बताना है. हाँ जी. व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर? The name of the narrator of the Canterbury Tales is very right. Yes, it is unknown. The narrator's name is unknown. Yes, very right. चलिए. Then we move on to question number 20. Which of the following events took place in 1381 in England? Which of the events took place in 1381 in England? Treaty of Bretigny, death of Edward III, invention of printing press, or the peasants' revolt? Which of the following events took place in 1381 in England? बिल्कुल सही. Again, Nirmal. Yes, it was the peasants' revolt. Yes. Oh, sorry. I marked it in a hurry. It was the invention of the printing press. Sorry. It was the invention of the printing press. Yes. William Caxton ने जो करी थी, है ना? Which was done by William Caxton. Okay. William Caxton ने जो करी थी. चलिए. Then we move on to question number 21. Chaucer is often considered the first representative of which movement in English literature? Humanism, aestheticism, expressionism or transcendentalism? किस मूवमेंट के जो है रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है चौसर को? इंग्लिश लिटरेचर के किस मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है? Is it humanism? Is it aestheticism? Is it expressionism? Is it transcendentalism? हाँ जी. There are almost like mixed answers I'm getting. How many of you are sure? Okay. So यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो मैं वेट करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे पहले ये क्लियर करें. अगर आप में से कोई जो है इस चीज का आंसर दे सकता है. कि वो ह्यूमनिज्म के रिप्रेजेंटेटिव थे या एस्थेटिसिज्म के थे या एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट के थे या ट्रांसेंडेंटलिज्म के थे? इट इज ह्यूमनिज्म. बच्चे ट्रांसेंडेंटलिज्म तो जाके कहीं रोमांटिक पीरियड में जाके शुरू होती है. ठीक है, नेचर से रिलेटेड थी बेसिकली ये. एस्थेटिसिज्म भी देखो वॉल्टर पेटर है ना, और एक्सप्रेशनिज्म वगैरह तो जो है आके मॉडर्न एज की जो मूवमेंट्स आती हैं, राइट?
मॉडर्निज्म में आती है एक्सप्रेशनिज्म। तो एस्थेटिसिज्म, हम अगेन ये भी रोमांटिक पीरियड की है, वॉल्टर पेटर से रिलेटेड जो हम पढ़ते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, है ना। और ट्रांसेंडेंटलिज्म भी जो नेचर से ही रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो अबाउट रोमांटिक एज। इवन आई थॉट सो शहिष्टा, क्योंकि मुझे भी, मतलब मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई इस आंसर में। इवन आई थिंक सो कि पेजेंट्स रिवोल्ट ही हुआ था। ठीक है, सो वी विल गो विद दिस, इट वाज पेजेंट्स रिवोल्ट, यस, पेजेंट्स रिवोल्ट ही था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इटालियन ऑथर्स डिड नॉट इन्फ्लुएंस चौसर? इन वाले कौन से जो है इटालियन ऑथर्स ने इन्फ्लुएंस नहीं करा था चौसर को? दांते एलिगरी, फ्रांसेस्को पेट्रार्का, पीट्रो बेम्बो और जियोवानी बोकाशियो। गलती हो गई मुझसे निर्मल। तब देखो मेरे भी मुंह से एक बार तो पेजेंट्स रिवोल्ट निकला था, है ना। पर मैं आंसर्स के साथ कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलो, यस राइट, इट्स पीट्रो बेम्बो। अदरवाइज बाकी तीनों से, दांते एलिगिरी के बारे में हमने कल बात करी, डिवाइन कॉमेडी इनका वर्क था, है ना, उससे इंस्पायर थे ही चौसर। देन फ्रांसेस्को पेट्रार्का एंड बोकाशियो से भी इंस्पायर थे। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर डिड विलियम कैक्सटन पब्लिश द कैंटरबरी टेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम? विलियम कैक्सटन ने कब पहली बार जो है कैंटरबरी टेल्स पब्लिश करा था? कब पब्लिश करा कैंटरबरी टेल्स जो है विलियम कैक्सटन ने? 1450, 1460, 1470 और 1480? इन विच ईयर विलियम कैक्सटन पब्लिश्ड द कैंटरबरी टेल्स? He published the Canterbury Tales in, yes, 1480, बिल्कुल सही, 1480 में। हेलो रीत, बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, इन द कैंटरबरी टेल्स one story connects a series of other stories. What is the literary technique called? जो लिटरेरी टेक्निक यूज करी गई है कैंटरबरी टेल्स में, उसको क्या कहते हैं जहां एक स्टोरी दूसरी स्टोरी के साथ कनेक्ट होती है? इट्स फ्रेम नैरेटिव, वेब नैरेटिव, बॉक्स नैरेटिव या केसिंग नैरेटिव? शहिष्ठा, आर यू श्योर विद दिस? हाँ जी, इट इज वेयर अ स्टोरी कनेक्ट्स विद अदर स्टोरीज। निर्मल, कितने आंसर्स दोगे? मुझे लगता है तुम सारे मार्क करके आओगे वहां पे। So basically the literary technique in Canterbury Tales, is it frame narrative, is it web narrative, is it box narrative or casing narrative? It is the web narrative. It is the web narrative, जहां पे एक कहानी जो है दूसरी कहानी के साथ जुड़ी हुई है, राइट? इट इज द वेब नैरेटिव। नहीं बच्चे, मैं एनटीटी की प्रिपरेशन नहीं करवा रही हूं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम ऑफ द टेक्स्ट? इनमें से
कैंटरबरी टेल्स, टेक्स्ट से यहाँ मतलब है क्योंकि देखो हमारे सारे क्वेश्चंस कैंटरबरी टेल्स से रिलेटेड है, तो मैंने बार बार टाइटल रिपीट नहीं करा। कैंटरबरी टेल्स की थीम क्या है? कोर्टली लव, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी, करप्शन ऑफ द चर्च और ऑल ऑफ द अबव। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट इज ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, कोर्टली लव के बारे में भी बात करी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी की भी बात आती है और करप्शन ऑफ चर्च को भी डिपिक्ट करा है यहाँ पे चौसर ने। क्वेश्चन नंबर 26, द पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड टू द shrine of Saint Thomas Becket in Canterbury Cathedral. Where do they depart from? ये हमने डिस्कस कर लिया कि वो थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे होते हैं कैंटरबरी में, बट वो अपनी जो जर्नी है वो शुरू कहां से करते हैं? साउथ वॉर्क, साउथ पार्क, साउथ बैंक और साउथ वॉक। हाँ जी, बिल्कुल सही, अगेन आपका जवाब। Where do they start their journey from? Where do they depart from? They depart from Southwark. They depart from Southwark. हाँ जी। Then we move on to question number 27. हम लोग चलते हैं निर्मल. Let's go to Canterbury. What is the prize for winning the storytelling contest? बच्चे, I don't have any idea about that exam जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. NTPC एग्जाम इज फॉर आई डोंट नो, कैन यू प्लीज टेल मी कि फुल फॉर्म क्या है उसका? ओके, सो प्राइज फॉर विनिंग द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट वाज अ फ्री मील एट द तबार्ड इन। हाँ जी, इट वाज अ फ्री मील एट द तबार्ड इन, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन नंबर 28 इज which character represents the highest social class of the group? हाईएस्ट सोशल क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे कैरेक्टर्स में से? स्क्वायर, नाइट, मंक और मिलर? यस, so you got to tell me that who represents the highest social class, the character belonging to the highest social class. The character belonging to the highest social class is? It's the knight. Yes, absolutely right. बिल्कुल सही, it is the knight. चलिए, question number 29. In the opening lines of the prologue to the Canterbury Tales, the narrator criticizes chivalry, attacks the corruption in the church, rejoices in the renewing cycle of life, or establishes the ideal of the Renaissance man. किस चीज को क्रिटिसाइज करता है जो नरेटर है प्रोलोग में? What is criticized by the narrator in the prologue to the Canterbury Tales? He criticizes chivalry, he attacks the corruption in the church, rejoices in the renewing cycle of life, or he establishes the ideal of the Renaissance man. Yes, he attacks the corruption in the church. ठीक है निर्मल जी, वेरी गुड हरप्रीत, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर बच्चे. हाँ जी, so it is the attack, he attacks the corruption in the church. Okay, then we move on to question number 30. According to wife of Bath, what do most women desire? According to the wife of Bath, ज्यादातर women जो है वो किस चीज की इच्छा रखती हैं? Sovereignty over their husbands, true love, perfect beauty or great wealth?
What do the women desire according to the wife of Bath? So the right answer is they want sovereignty over their husbands. Alright, they want sovereignty over their husbands. चलिए, question number 31. What is a romance? An erotic tale of love and passion, a story about Romans, a story of knights, ladies, quests, and love, a cheap book you buy from a drugstore. So, romance is a story of knights, ladies, quests, and love. Right? उसको romance बोला जाता है. It's not anything related to a love story or anything like that. But it's a story of knights, ladies, quests, and love. ठीक है जी? चलिए, question number 32. What is the first Canterbury Tale? पहली कहानी कौन सी है Canterbury Tale में? The Cook's Tale, the Miller's Tale, the Knight's Tale, or the Reeve's Tale? Which is the first story in the Canterbury Tales? The first story in the Canterbury Tales is, it is again the Knight's Tale, right? Knight ही जो है वो सबसे अमीर है, सबसे status वाला बंदा है Canterbury Tales में, and the Canterbury Tales begin with his story. Question number 33. The young Squire who appears in the Canterbury Tales is the son of, किसका बेटा है Squire? नाइट का, पार्डनर का, फ्रायर का या समनर का? किसका बेटा है स्क्वायर? वेरी इजीली यू कैन आंसर दिस. यस अगेन राइट शहिष्ठा. ही इज द सन ऑफ द नाइट. वेरी राइट. Then we move on to question number 34. A sailor appears in the prologue to Canterbury Tale. The sailor's ship name was. एक सेलर की अपीयरेंस होती है कैंटरबरी टेल्स में, उसकी शिप का नाम आपको बताना है. मैग्डलेन, मरियन, मंडेलन या मॉडेलेन? शिप का नाम. The ship's name was Magdalen. It was Magdalen. Maudelayn. It was Magdalen. All right. And the last question. What are the tales told by Chaucer? जो tales Chaucer खुद सुनाते हैं. The tales of Sir Topaz and the tale of Melibea, Sir Thomas, tale of Malibu, Sir Thames and the tale of Melib, Sir Tupes and the tale of Melibea. कौन सी stories Chaucer खुद सुनाते हैं? Yes, absolutely right. They are the tales of Sir Thopas and tale of Melibea. Okay. Hanji. So for tomorrow again, right? Again, I will be putting you questions from Chaucer only, right? You will be preparing Chaucer only for tomorrow again. जिसमें Canterbury Tales के भी क्वेश्चन होंगे और Chaucer के बाकी वर्क से रिलेटेड भी there will be questions, right? So be prepared with them. I'll see you all tomorrow at the same time. For any kind of information, you can contact on any of these two numbers. Okay. Thank you so much to all of you for attending the session. Have a very good day. Don't forget to share the video with your friends, with your acquaintances who are preparing for NTA UGC Net English subject. And don't forget to subscribe the channel. Thank you everyone and have a very good day to all of you.